Yeah, so hello, I'm audible. ओके सो हम अभी लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आज का दिन का कुछ खास है। आज अभी न्यूज़ आने वाला है, प्री न्यू ईयर सेशन है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। ओके ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, वी कैन स्टार्ट विद यूरो यूएसडी फर्स्ट। ओके या, सो स्टार्टिंग द यूरो यूएसडी, हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। हमेशा टाइम फ्रेम स्टार्ट करने के टाइम, एनालिसिस स्टार्ट करने के टाइम आपको पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा 4 आवर, फिर 30 मिनट, 50 मिनट, जो भी है उस प्रकार का हमको एनालिसिस हर दिन करना चाहिए। सिर्फ आज का नहीं, हम हर दिन ऐसे लाइव ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। एनालिसिस ऐसे ट्रेड ब्रेकडाउन एनालिसिस हम बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हम पहले हमारा क्या डेली बेसिस का स्ट्रक्चर क्या बोलने चाह रहा है हम देखते हैं। तो अब अभी देखते हैं, तो मार्केट अभी और बुलिश मार्केट, राइट। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अभी हायर लो बना के रखा है। अभी मार्केट अभी हायर हाई जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। इफ यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम द हियर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर low, then the higher high, then the higher low, then we can see the market is going to next higher high. Clear? So हमको और इन डेप्थ जाने के लिए, स्ट्रक्चर वाइज देखने के लिए, हम यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक और स्ट्रक्चर दिया है। इंटरनल भी अभी बुलिश ही है। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू जस्ट टेक विद अवर फिब ऑल्सो, फिब भी क्या बोलते हैं, अभी ब्रेक और स्ट्रक्चर दे रखा है। फिर मार्केट कहाँ आ गया, एक डिस्काउंट जोन पे आ गया। डिस्काउंट जोन से मार्केट अभी क्या दे रखा है, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग के साथ मार्केट अभी बुल टर्न के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके पहले मार्केट ने क्या किया, 2-3 दिन पहले का जो स्वीप है वो लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। इसको और इन डेप्थ जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, 4 आवर पे जाना पड़ेगा। तो 4 आवर में अभी क्या दिख रहा है मार्केट, if you are going to 4 hour, we can see market is in a consolidation range in euro USD। स्ट्रक्चर वाइज देखेगा तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर गया, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जाके यहाँ पे लिक्विडिटी, फिर यहाँ पे बिल्डअप दे के मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गया हुआ है। सो अभी सिचुएशन देखने के लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर इन द सेंस वी कैन सी द हायर हाई, हायर लो स्ट्रक्चर, राइट। इफ यू कैन सी देयर इज ए स्ट्रक्चर ब्रेकआउट टू द डाउन साइड, एंड हियर देयर इज ए डिमांड जोन, देयर इज ए डिमांड जोन हियर, एंड वी कैन सी देयर इज ए inducement in this area. Inducement in the sense liquidity buildup. This is our liquidity buildup. सो आज के बाद आपको एनालिसिस करने के लिए पहले आपको 1 डे टाइम फ्रेम, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम, फिर हमको 1 आवर टाइम फ्रेम जाएगा, फिर 50 मिनट में जाएंगे। ठीक है, 50 मिनट में हमारा एंट्री रहेगा। डेली बेसिस पे हमारा स्विंग कैसे जाएगा, इंटरनल कैसे जा रहा है, वो हमको 4 आवर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। 15 मिनट में और ब्रेक डाउन करके 15 मिनट पर हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बाई एयर सेल प्लान कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट अभी यहाँ पे एक लिक्विडिटी बिल्डअप करके मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, विच इज़ अभी कहाँ है मार्केट, एक 4 आवर सप्लाई जोन पे मार्केट अभी रिएक्शन दे रहा है। वो भी अच्छा खासा रिएक्शन नहीं है। इफ़ यू कैन सी मार्केट कल 6 बजे यहाँ पे टैप हो गया इस वाला जोन पे, और यहाँ पे इतने ज़्यादा कंसोलिडेशन रेंज दे रहा है, विच मीन्स ये वाला जोन बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। this zone, this supply zone is not that much strong. Okay, if it is that much strong, then we can see a solid reaction towards the downside, right। मार्केट यहाँ से टैप करके मार्केट थोड़ा बहुत तो रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन अभी दिया हुआ नहीं है।
इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिएक्शन दे के मार्केट और ऊपर जा सकता है. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए लिक्विडिटी बिल्डअप वी कैन सी, एंड देयर इज ए in the upper side we can see a highs in the above. This is our extreme supply zone. Okay, and in this market we may see this scenario in euro USD take out the low, then we can see a rally towards upside. This is our analysis in 4 hour time frame. Okay, in 4 hour time frame यहाँ पे देखने से हमको यहाँ से एक बाई प्लान किया था, ठीक है, 1:3 1:4 का टारगेट लेके हम बाहर आ गया. अभी हम सप्लाई का कुछ कंफर्मेशन दिया हुआ नहीं है, ठीक है. अब अभी 15 मिनट में जाएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज पे. कल न्यूयॉर्क से कंसोलिडेशन रेंज पे था, ठीक है. सो ये वाला रेंज अगर ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर एशियन हाई या एशियन लो ब्रेक करना चाहिए. फिलहाल अभी फेक मूव करके एशियन हाई टेकआउट कर लिया लिक्विडिटी, अभी एशियन लो की तरफ आ रहा है. क्लियर? ओके. So as we discussed, the 4 hour supply is very that much not strong. Why is that not strong? Because we can't see any reaction from this area, right? So, and today 5:30 we are having news also, and in that news we can expect some sort of move. So there is a liquidity in the above also and liquidity in the below also. First probability we can see that we can take a sweep at this area, we can take out the liquidity in this area and market will go towards upside. एंड व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब ऐसा है कि जहाँ पे मार्केट को अच्छा खासा मूव लेने के लिए आपको एक प्रॉपर वॉल्यूम चाहिए, राइट. तो वो वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा? लिक्विडिटी की वजह से. लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उतना अच्छा खासा वॉल्यूम दिखेगा, राइट. अभी ये जो फॉल देखो, एशियन हाई का जो लिक्विडिटी टेकआउट करके मार्केट सीधा नीचे आ रहा है, राइट. एशियन लो की तरफ आ रहा है, राइट. एशियन लो के नीचे भी एक लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी लेके और ऊपर जा भी सकता है, और मार्केट यहाँ से नीचे आके इस वाला जोन पे, विच इज़ द एक्सट्रीम जोन ऑफ व्हाट यू कैन से, ये सप्लाईज और डिपेंड्स ऑन, दिस इज द एक्सट्रीम डिमांड जोन. ओके, सो this is the scenario of euro USD. So the news is coming, and in euro USD we can see a proper consolidation. If the all the structure is breaking, yeah, now the liquidity has been taken and the Asian low also, वे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है. इतना वॉल्यूम कैसे आ रहा है? यहाँ से जो लिक्विडिटी हाई टेक करके मार्केट सीधा एशियन लो और नीचे का लिक्विडिटी लेने के लिए आ रहा है, राइट. दिस इज वॉट आवर वॉल्यूम्स लुक लाइक. लिक्विडिटी बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया, अभी साइड लिक्विडिटी लेने आ रहा है. अभी साइड लिक्विडिटी लेगा तो फिर मार्केट का जो जहाँ पे जाना है वहाँ पे मार्केट सीधा जाएगा. सो सीधा इन द सेंस हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ यहाँ से एक कंफर्मेशन चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम में जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन वी कैन सी एक्सट्रीम डिमांड जोन, देन वी कैन प्लान अवर बाइज टू. इफ वी गेट ए प्रॉपर कंफर्मेशन ओनली वी कैन बाई, अदरवाइज वी कांट प्रेडिक्ट, राइट. मार्केट हमको कोई मतलब ऐसे दावत कह नहीं सकते, राइट. कोई गारंटी नहीं दे सकते मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा. अभी देखो, अभी लिक्विडिटी ले लिया है, थोड़ा बहुत रिएक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ. इफ यू कैन सी इन द लोअर टाइम फ्रेम टू, which is 3 minute 5 minute and all, there should be a proper structure shift in the lower time frame. ठीक है, अभी मेरे मानना है कि अभी जो न्यूज़ के बाद हमको एक अच्छा खासा बाइस और सेल्स प्लान कर सकते हैं विथ प्रॉपर कंफर्मेशन. ये कंफर्मेशन क्या होता है, कोई आइडिया है? एनीवन? कंफर्मेशन इन द सेंस आपको 2 से 3 कंफर्मेशन आना चाहिए बाई जाने के लिए या फिर सेल जाने के लिए. ये जो कंफर्मेशन है हमारा ट्रेड प्लान सेटअप्स, राइट. हर किसी का अपना अपना सेटअप्स होता है, उस प्रकार का आपको बाई और सेल प्लान करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर सेटअप, देयर स्ट्रैटेजीज, देयर बैक टेस्टिंग रूल्स एंड ऑल.
So this is the overall scenario of Euro USD. And if you can see in the GBP USD, first of all we need to take our daily time frame. Okay, डेली टाइम फ्रेम भी क्या कर रहा है अभी, डेली टाइम फ्रेम क्या कहने जा रहा है अभी. वी कैन सी देयर इज ए शिफ्ट, सेम सिनेरियो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है. ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ का था, जुलाई 2025 का जो हाई टेक आउट करके मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ रहा है. दिस इज आवर इंटरनल स्ट्रक्चर. सो इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बुलिश है. तो फिर हम क्या प्लान कर सकते हैं, डेली के हिसाब से बाई प्लान कर सकते हैं. तो बाई हमको दो लेवल से प्लान कर सकते हैं, या फिर आपको प्रीमियम रेंज से भी बाई प्लान सकते हैं, या फिर डिस्काउंट जोन से भी बाई प्लान कर सकते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन? सो दिस इज द फिब. In the fib we can see the above 0.5 range, these are the premium range. Okay, and with the below range these are the discount range. तो ये प्रीमियम एंड द डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है, जैसे आपको अगर कुछ सामान बेचना है या खरीदना होता है, जैसे आपको कुछ सामान खरीदना होता है तो खरीदने के टाइम आपको प्रीमियम प्राइस रेंज पे खरीदेगा या डिस्काउंट प्राइस रेंज पे खरीदेगा, सिंपल लॉजिक राइट. तो आपको डिस्काउंट रेंज तक वेट करना चाहिए. तो डिस्काउंट रेंज यहाँ पे कहाँ आया था, 0.618, यहाँ से एक रिएक्शन आ रहा है राइट. रिएक्शन यहाँ पे और जूम करेगा तो आपको एक और चीज़ दिखेगा, दैट इज़ व्हाट, the previous day low has been taken out right. This is the previous day liquidity sweep and we can see the market is pushing towards upside. previous day का high भी taken out हो गया. ठीक है, और यहाँ से आपको एक छोटा सा reaction towards downside दिखेगा. then we can see a bullish run in GU also. similar in the EU and GU, both are similar size. Okay, so 4 आवर पे देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, okay. So in 4 hour also what is happening here, we can see there is a structure shift, there is a, this is our structure shift, and we can see this is the swing structure, breakout structure. Okay, and here we go. यहाँ से मार्केट ऊपर की तरह गया और यहाँ से क्या रिएक्शन दे रखा है, एक फ्रैक्चर शिफ्ट दे रखा है टुवर्ड्स डाउन साइड राइट. मार्केट हायर हाई हायर लो क्रिएट करने के बाद एक हायर लो क्रिएट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा राइट. वो हायर लो करने के लिए आ गया और कहाँ से अभी रिएक्शन दे रहा है, विच इज़ इन दिस रेंज राइट, दिस पर्टिकुलर रेंज. यहाँ पे जूम करके देखेगा तो यहाँ पे एक प्रॉपर डेली 4 आवर फेयर वैल्यू गैप है राइट, FEG, और वी कैन से the imbalance, inefficiency, these are the terms we are using in this area. This is our proper imbalance zone और यहाँ से प्रॉपर टैप करके मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है. दिस इज द फर्स्ट कन्फर्मेशन एंड इफ यू कैन सी देयर इज अ सेकंड कन्फर्मेशन टू. ओके, सो दिस इज अवर स्विंग लो राइट, इंटरनल का स्ट्रक्चर लो ये वाला है. तो यहाँ से आपको एक फिप पकड़ेगा तो यहाँ से सीधा ऊपर राइट. So you can simply see there is a 618 area. Below that there is a proper inefficiency, or we can say it FEG. After that FEG the market is creating towards upside. Okay, तो यहाँ पे भी दूसरा कंफर्मेशन ले लिया. अब तीसरा कंफर्मेशन लिए क्या करना पड़ेगा, और लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा. क्लियर, लोअर टाइम फ्रेम में जाने के लिए अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्चर शिफ्ट करके मार्केट सीधा एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इंटरनल करके यहाँ से अभी जो रिएक्शन आ रहा है राइट, ये वाला सप्लाई जोन से मार्केट अभी रिएक्शन आ रहा है. ये वाला रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे. ओके, या सो दिस इज अवर 15 मिनट स्ट्रक्चर. 15 मिनट स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, दिस इज अवर 15 मिनट्स स्ट्रक्चर. यहाँ पे
शिफ्ट मिलके यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा था, राइट। यहाँ पे हमारा एक स्कैल्प 1:2 पकड़ के ले लिया था, उसके बाद और ऊपर जाएगा तो अभी मार्केट यहाँ पे भी रेंज बाउंड की तरफ ही एक्ट हो रहा है, राइट। सो करंटली 2 days the market is in the zone. So currently proper clear we can say there is a no proper structure forming, right. ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होके मार्केट दोनों साइड में कंसोलिडेशन की तरफ चल रहा है, राइट। हमको 3 लेवल्स होते हैं, 3 ट्रेंड्स होते हैं, विच इज़ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। हमेशा साइडवेज मार्केट में हमेशा ट्रेड नहीं करना चाहिए। वी डोंट हैव टू फोर्सफुली गेट इनटू अ ट्रेड इन द sideways market. The reason is that we can't predict the market will go in which direction, we can't predict. For us supply zones पे टैप करके भी मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ रहा है. This is what the market looks like. अभी यहाँ पे एक प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं दिख रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखने के बाद भी हर किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंड हो रहा है इस वाले जगह पे, ओके। इवन इन SMCICT अकॉर्डिंग टू दिस ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर वी कांट इवन प्लान फॉर अ बाई एंड फॉर अ सेल। आपको पहले यह समझना चाहिए हर दिन हमेशा ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट, ठीक है। हर दिन हमेशा ट्रेडिंग दिन नहीं होता है। ट्रेडिंग दिन हमेशा एक प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट्स में होना चाहिए, या फिर ट्रेंडिंग मार्केट्स, इट कैन बी अप ट्रेंड, इट कैन बी डाउन ट्रेंड, नॉट इन ए साइडवेज मार्केट, क्लियर। अभी GU भी सेम हालत जैसे EU में दिख रहा है, राइट। GU दोनों एक साथ है तो दोनों बाई जैसा अभी रिएक्ट हो रहा है। दीज आर रिएक्टिंग इन ए सेम criteria, or we can say same situation, both are in a sideways market, and we can see a proper reaction in our New York section, proper New York section with a proper news at 5:30, okay. Any doubts in live? Then moving to our euro GB gold, okay. So in gold we can see in a daily time frame there is a proper market in a bullish trend, okay. This is a proper bullish trend, and what did the market done? यहाँ पे एक इंडियन स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गया हुआ है, एंड इस वाला जोन हमारा इम्पोर्टेंट जोन था, ठीक है। दिस इज व्हाट ए लिक्विडिटी लुक्स लाइक, दिस इज ए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, and all the trend line liquidity has been cleared out. After that the market is keep pushing higher and higher, right. If you can see, this is what a proper discount zone, premium zone look like. After a breakout structure we can see a higher low that is been formed and taken out all the liquidity, the trend line liquidity, and the market is keep pushing higher and higher, okay. So this is what in a higher time frame look like, and if you can see in the lower time frame we can see forward time frame, yeah. Look at this area, this is our internal structure, right. So in internal structure the liquidity has been taken in 4/2, okay. So this is a high probability liquidity sweep, the structure shift, this is what our structure shift look like, yeah. This is a fractal shift or fractal reaction we can say. In that fractal shift, after the fractal shift we can say, we can simply take our fib from high to low, and this was our extreme demand zone, right. This was our extreme demand zone, and what did the market did? The market simply tap into a forward supply zone or demand zone, and the market pushed keeping higher and higher, high and higher high, right. So this is what a proper confirmation looks like, tapped, right, took this liquidity, this is what inducement looks like, inducement, okay, tapped and went, right. So currently market
is going to break this zone, this high. Okay, so we need a proper confirmation. Here also we need a proper confirmation. There is a build up liquidity below also, so wait for a proper confirmation to plan our buys too. Okay, always remember, plan your trades according to your confirmation, not according to the candle color, or we can say candle structure, whatever it is. ओके आपको सिर्फ कंफर्मेशन के बिना आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए. सिर्फ एंट्री कब लेना चाहिए? आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही आपको एंट्री लेना चाहिए. ओके, एंड मूविंग टू 50 मिनट. ओके, सो वी कैन सी, सो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर हम मार्क करना पड़ेगा. यहाँ से मार्केट यहाँ पे सीधा शिफ्ट, ठीक है, इस वाला जगह से शिफ्ट, breakout structure, clear, then yeah, okay, यहाँ पे फ्रैक्चरल शिफ्ट देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है. फ्रैक्चरल शिफ्ट, यस, दिस इज आवर नेक्स्ट एरिया. This is our next shift. Yeah, so this is one of the buying zone. We can see this area, right? The liquidity has been taken, the buyer stop hunt, liquidity sweep. There is a proper demand zone. This is our proper buying zone. If the market comes on this range, okay, this is all the liquidity that is built up for the sellers, right? So although we can see this is the proper liquidity build up, every retailers are buying at this trend line, right? Every retailers are buying at this trend line, and the retailer stop loss are below this trend line. So there is a huge liquidity pool below at this trend line. When the smart money players, they take out the proper stop loss of the retailers, then what did they do? They will try to manipulate the retailers, then they will come down, take out all the stop loss, then they will go. So this is the scenario of current gold. If we can plan our entries like this, simply the buys at this area, that is 4954, and our stop loss will be around 240 pip, and this is our swing entry, which is 1:5 trade. Once this area has been triggered, then we can go with our buys with a proper confirmation in the lower time frame. Okay, before that, don't jump into a trade unless and until we get a proper confirmation. Clear? Yes. So this is our A plus setup, and yeah, this is our buys. If you are risking 1%, then you are gaining up to 5.5% reward. Okay, targeting the external liquidity. So this is our liquidity range, and yeah, this is our external liquidity. The reasons are pretty simple. Here all the buyers are planning to buy from this area, that is the trend line retailers. Okay, their SLs are keeping below, and there is an inducement below this zone. Okay, so this is the high quality setup when we are planning to buy. Okay, it can be like this scenario, or it can be like this also. Even this liquidity has been taken out, and then the market will
fall to this range. Okay, there are both the scenarios, this and this and this. So there is a liquidity here also. Yeah, yeah, change of character. Yeah, there are two situations. This is our second scenario. Okay, so I am repeating again. Our buys are be planned at 4954. Okay, let me set my alerts to yes. Simply you can take our yeah. So currently we don't have any trade, and if you are planning to take trade, you can simply take at this zone, that is buys from this area, and simply take set our stop loss at this area and the TP at this high. Okay, always remember, if you book, either you should partially book your trade at 1:2 and rest hold the 20% of your trade to this top, or either you can simply do just yeah, from this area we can simply set our SL at break even, right? This area you should keep our SL at break even, yeah, and rest you can hold. There are two scenarios. First of all, you can book at your profit, entire profit at 1:2. Okay, second option is you can book your 80% of your entire trades at this 1:2 range, then you can hold the rest of the trades up to this high, right? Then the third option is that you can simply hold the entire trade up to this high. There are three possibilities. Okay, there can be situations that when we can see the market come at this range, and when any of the fundamental lose, then the market can dump all the movement to downside, right? So we can't predict the market. We get a proper confirmation, then we are entering into a trade. Simply remember these three scenarios. First of all, if you can, the best and foremost way is to book your entire, like 80% of the profit at this area, then remaining 20% you can simply hold the trade with the stop loss at break even, right? So these are the three scenarios we can expect in gold. Currently the EU and GU both are in the consolidation range, and we can't predict the market what will they do. Either can be take out all the sell side liquidity and then the buy side liquidity, or vice versa. So the expectations are in gold like this. This is the scenario in gold. Okay, so currently I am focusing only on EU, GU and gold. Okay, so EU, there is a, yeah, as I told you, the Asian high has been taken out, then now the Asian low has been taken out, although this liquidity has been also taken out. Now we can see a slight reaction in the EU side. Okay, if you can see in the lower time frame also, there is a proper, we need a proper volume. This low has been taken out, we need a structure shift at this area. If we can see structure shift at this area, then we can plan our buys at this area. But I told you this is a risky trade. Okay, we can plan up to 1:2, simple 1:2 trade. This is not that much like holding up to the entire high, because the highs has been taken, the Asian highs liquidity has been taken, now the Asian low has been taken, even the London has been also taken. So we can see a proper structure shift. This is the scenario. Just a second. Shift, then back to our discount zone, then our buys. So this is the current situation in EU also. So there are two trades currently planning, one in EU and one in gold. Okay,
Any other doubts? सी लुक एट दिस, मैंने क्या बोला था आपको, ये जो हाई क्या करना चाहिए था, टेक आउट करना चाहिए था, राइट। अगर आपने यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग में सीधा बाई करके, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होता तो ये हालत होता। ठीक है, ये होता है प्रॉपर एजुकेशन के वजह से आपको ट्रेड करने का। दिस इज द सिंपल कंफर्मेशन ट्रेड, राइट। लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट ए प्रॉपर कंफर्मेशन एंट्री शुड बी। सीधा एक बुलिश एंगल्फिंग में सीधा एक ग्रीन कैंडल पे कुछ भी तरीके से बाई करके स्टॉप लॉस सीधा इसके नीचे टारगेटिंग हाई, दैट इज नॉट द लॉजिक। यू शुड हैव ए प्रॉपर कंफर्मेशन फॉर दैट। अब प्रॉपर कंफर्मेशन सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ेगा, राइट।
सो वो प्रॉपर एजुकेशन हमारा यहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल ईजली और प्रॉपर क्या बोलते हैं फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है. फॉर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड लुक एट दिस. दिस इज़ वॉट हैपनिंग. जो लोग यहाँ पे बिना एजुकेशन की वजह से यहाँ पे बाई कराओ, उसका जो स्टॉप लॉस लेके मार्केट सीधा ऊपर जाएगा. एंड वी शुड ऑलवेज वेट फॉर दिस कंफर्मेशन, दिस रेड लाइन. After closing this red line, then we can plan for our buys. Okay, so this is what real examples look like. What about gold? Yeah, gold is currently in a ranging. This is our gold and gold का इतना नीचे जाना चाहिए ऐसे न्यूज़ आने का टाइम, इतना बिल्डअप है. ठीक है, जो बिल्डअप नीचे की तरफ आके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा नीचे आने के लिए. अगर ये भी लो टेक आउट हो गया तो फिर भी ठीक है. या मार्केट अभी क्या करना चाह रहा है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करके भी मार्केट नीचे आ सकता है. दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी. अगर ये जो हाई लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आएगा, फिर आपको यहाँ पे बाइस का प्लानिंग कैंसिल करना पड़ेगा. राइट, वी आर प्लानिंग अवर एंट्रीज अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी. राइट, अगर सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया तो फिर बाई साइड लिक्विडिटी का टारगेट करेंगे. अगर बाई साइड लिक्विडिटी का हो गया तो फिर हम सेल साइड के लिए टारगेट रखेंगे. दैट इज व्हाट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वी आर planning our trades, not like simply others like amateur traders and all. We are simply focusing on liquidity trades, and for the other liquidity trades you need a proper confirmation for taking an entry and proper stop loss. बिफोर दैट वी नीड अ प्रॉपर कन्फर्मेशन टू. कन्फर्मेशन के बिना भी हमको कोई ट्रेड लेके कोई मतलब नहीं है. टू बी फ्रैंक, आपका अकाउंट का जो भी है वो सारे के सारे उड़ जाएगा. ठीक है, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इफ़ यू टेक ए प्रॉपर एजुकेशन देन यू कैन मेक ए टन्स ऑफ मनी इन द मार्केट. ओके, विद अ प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड. सो दिस ऑल थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड इन द लाइव. Okay, so we can see in the next day with our next mentors. Okay, till then make sure you follow our plan that is what discussed in the live. Okay, या का हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ इसका मतलब हमारा ट्रेड अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना. ओके, या सो catch you in the next session.